Hello, good afternoon to all of you. Uh, if uh, any issue with my voice, you can message me. Uh, if I am completely audible to you, please message me. And the screen is visible to you, please message and confirm it. The voice is clear and screen is visible to you. Is it my voice clear and screen is visible? Please respond in the chat box. Okay. So today we are going to discuss about the some topic from biomolecule. Uh, so I think after the last class, sir already discussed about the some basic part or some primary part from the biomolecule. In today's session, we are going to discuss about the next portion. Okay. So before going to discuss about the core topic from this lesson, we are going to discuss some questions and then we go toward the our class. Okay. So first question on your screen. Hope screen is visible to you. First question is the number of amino acids known to occur in cells are about. ठीक है? मतलब how many numbers of amino acids which responsible for the protein formation or how many number of amino acid which is uh, found in the cell. Okay. And options are option A is a 20, option B is 26, option C is a 200, and option D is a 170. So please answer in the chat box. I'm waiting for your responses. You can use the chat box. You can write option in the chat box, and then we will discuss the solution. You have a 1 minute to solve this question. Please answer fast. Okay. The number of amino acids known to occur in the cell are about not a 26, not a 200, not a 170. It's a 20 amino acids. Okay. In our books, in our syllabus, it's a 20, but in practically, it have a 21. Okay. So one amino acid again discovered by the scientist, but the same question asked in your examination, then your answer should be 20. आपका आंसर 20 ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं. ठीक है. So please remember this thing. ठीक है. So moving toward the next question. Next question on your screen is milk sugar is. Okay. So you already know about the milk. Okay. Then which known as the milk sugar? Option A glucose, option B fructose, option C lactose, option D sucrose. You have a 1 minute to solve this question. Please answer fast. चलो जल्दी जल्दी आंसर करो. Please answer fast, guys. Please answer in the chat box. The sugar is known as the okay. सुमति भारत. ओके ठीक है. करेक्ट आंसर. ओके ठीक है चलो.
So here milk sugar is. So whenever we discuss about the sugar now, at that time please remember the first words, or we can say first letter in this word. Okay, that is the glucose, fructose, lactose, and sucrose. Okay, so here the correct option is the lactose. You already know about it. Okay, so whenever the lact word come, so it about the sugar. Okay, it about the sugar, and it uh, also I think you know about the lactobacilli. So it is the bacteria which are responsible to development of we can say uh, that butter sorry जिसे दही कहते हैं हम, ठीक है, that the thing curd. Okay, so lactose is the sugar which present in the milk. Okay, glucose is the sugar which present in the blood. Okay, so remember by this way. Fructose is the sugar which present in the fruits. ठीक है, so fruits के अंदर रहेगा fructose, and cane sugar known as the sucrose. ठीक है, so cane sugar किसे हम कहते हैं, sucrose को कहते हैं. So this is all about the different names of the sugar. ठीक है, ये अलग अलग नेम है शुगर के लिए. शुगर इज दी वन ऑफ कॉमन नेम एक्चुअली, एंड देयर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज इन द शुगर. वी विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, सो कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज द लिपिड. ठीक है, so what is meant by lipid, and how lipid is the different from other molecules, or we can say biomolecule. So you know already oil, fats, ठीक है, आर दी लिपिड कंपोनेंट्स. ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, लिपिड कंपोनेंट्स है. So lipids are the water soluble. You can see here they are the water insoluble. Sorry, not a soluble, water insoluble. That means they not completely dissolve in the water, or they not dissolve in the water completely. ठीक है, and that's why it is known as the water insoluble, and it contain carbon, hydrogen, oxygen. ठीक है, but oxygen atoms are the less in the lipids. Okay, then it first time the term lipids given by the one of scientist, and the name of scientist is the Blur in 1943. ओके, सो 1943 में ये टर्म दिया गया था बाय द ब्लर. ओके, सो it also known as, if we see the definition of lipids, then it is the fatty acid esters of alcohol. Okay, fatty acid esters of alcohol which insoluble in water. ठीक है, so I am right here, fatty acids esters of alcohol which insoluble in water is known as the lipids. Then the question will arise, what is mean by fatty acid? Fatty acid का मतलब क्या होता है? If you have anyone know about the fatty acid, you can answer me. किसी को अगर पता है फैटी एसिड के बारे में, आप मुझे आंसर कर सकते हो. 1 minute. किसी को पता है, एनीवन? ओके, ठीक है. 1 minute. Yes. So here फैटी एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, सो फैटी एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स which have a hydrocarbon chain, and that hydrocarbon chain contain the carboxylic acid in the end. ठीक है, सो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बोक्सिलिक
एसिड का चेन जो है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है इन द एंड। ओके, एंड इट इज द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो इट इज द कंटिन्यू चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो उसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स। ओके, एंड what is meant by lipid? Lipid are the fatty acids esters of alcohol which are insoluble in the water. So this is all about the definitions. There have a different types, but majorly three types of the lipid. First is the simple lipid, next one is the compound lipid, and last one is the derived lipid. So we will discuss about the all the things. ठीक है, हमें सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करना है. That is the simple lipid, compound lipid, and derived lipid. So let's start with the simple lipid. What is meant by simple lipid? Simple lipid का मतलब क्या होता है? ठीक है. So it formed by the fatty acids, alcohol. 1 minute. ठीक है. So it formed by the fatty acids and alcohol. So which type of alcohol? Like glycerol. ठीक है. So glycerol is one of alcohol. ठीक है. उससे ये बनता है. It is the combination of fatty acid and glycerol, we can say. So here you can see fatty acids are the lipids with hydrocarbon. We already discussed about the fatty acid. Okay, and you can see this is the carboxylic acid group. Okay, and here you can see the functional group with the carboxylic acid. So you can write the things simultaneously. जैसे जैसे हमारा क्लास चल रहा है उस समय आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट्स. ठीक है. So there have some example. You can see this is the palmitic acid. Okay, and here you can see the 16 carbon present in this palmitic acid. यहाँ पर हमें 16 कार्बन देखने को मिल रहा है palmitic acid के अंदर. Likewise, you can see the next example here again, arachidonic acid. ठीक है, so arachidonic acid also one of example of it. ठीक है. So moving toward the next part. So fatty acids are divided into two parts or two types of acids again. Okay. Uh, First is saturated fatty acid, and next one is the unsaturated fatty acid. Then what is the difference between saturated fatty acid and unsaturated fatty acid? So major difference in the saturated and unsaturated fatty acid are the bonds. ठीक है. So here you can see they have a no double or triple bond. Means in case of saturated fatty acid, they don't have a double or triple bond between the carbon atom. You can see the example also in the downside. Okay, यहाँ पर नीचे आप example देख सकते हो. इस example में देखो one of example that is stearic acid. Okay, and in this stearic acid you can't see any double or triple bond. ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलते. सो दिस इज दिस सैचुरेटेड फैटी एसिड, उससे हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड. यू कैन सी द एग्जांपल आल्सो हियर, palmitic acid, stearic acid, etc. ठीक है. Likewise, in case of unsaturated fatty acid, you can see carbon double bonds. Okay, one or more carbon double bonds. Okay, you can see here. This is the example. The example is oleic acid. ये oleic acid का example है, and you can see these are the hydrocarbons. ठीक है. यहाँ पर हमें कार्बन और हाइड्रोजन का चेन दिख रहा है. यू कैन सी द चेन ऑफ हाइड्रोजन and carbons, and you can see here in between these two chains carbon double bond carbon, and that's why it is known as the unsaturated fatty acid. उसे हम कहेंगे unsaturated fatty acid. So this is the major difference between the saturated and unsaturated fatty acid. Okay, again here you can see the complete difference on it. Okay, so we go through the one by one from the each points. So first is
The hydrocarbon chain without a double bond is known as the saturated fatty acid. In case of unsaturated fatty acid, one or more double bonds are present. Here, these are the straight chain. Okay, straight chain in the sense continue chain like this. Okay, इस तरीके से. ठीक है, so that's why it is known as the straight chain. But here due to double bond it get bend. मतलब double bond के कारण ये bend भी हो सकता है like that. Okay, so यहाँ पर double bond है, so like that. Next, this is the important one, and this type of question asked in the examination. Okay, for example, saturated fatty acids are the solid at room temperature. So question कैसे आ सकता है या बन सकता है? Which fatty acid are the solid at room temperature? ठीक है, and options रहेगा उसमें saturated fatty acid, unsaturated, and other options like that. And here, in case of unsaturated fatty acid, it have liquids at a room temperature. ठीक है, वो कैसे रहेंगे? लिक्विड रहेंगे रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. So I have one question I want to ask to you. So we have oils. Okay, that means we have a soybean oil, we have a different types of oil, and we have a butter. Then butter is come under which fatty acid, and oil comes under which fatty acid? Oil किस fatty acid के अंडर आएगा और butter किस fatty acid के अंदर आएगा? Please answer in the chat box, guys. Very easy question. चलो जल्दी जल्दी आंसर करो. One minute, I need to check chat box. Okay, okay, ठीक है. Please answer fast. चलो चलो. ओके, ठीक है, चलो. सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आंसर मी. ठीक है, चलो आंसर एक बार हम देख लेते, रिव्यू कर लेते हैं. सो क्वेश्चन इज द सिंपल. क्वेश्चन क्या था हमारा? हियर यू कैन सी द फैटी एसिड which solid at room temperature, उसे हम कहेंगे saturated fatty acid. That's why butter is the saturated and oil is the unsaturated fatty acid. ठीक है, so इसको हमें रिमेम्बर करके रखना है. ठीक है. Next, the melting point of saturated fatty acid is the high. ठीक है, you can see in this slides. ठीक है, so higher melting point रहेगा किसका? Saturated fatty acid. In case of unsaturated fatty acid, they have lower melting point. Okay, and generally unsaturated fatty acid found in the plant cell. Okay, ये हमें कहाँ पर मिलता है? Plant cell में देखने को मिलता है. But saturated fatty acid also known as the animal fat. So remember these things because most of question will ask from this part also. Okay, that's why. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स पर ही क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. So coming toward the next, you can see the complete diagrammatic represent of saturated and unsaturated fatty acid, and you can see the complete examples. यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल एंड उसके डायग्राम्स. ओके, डायग्राम इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का जैसे डायग्राम बनाते हैं, दैट टाइप ऑफ डायग्राम नॉट made for the fatty acids because you know fatty acids are the long chains.
वो बहुत लॉन्ग चेन रहते हैं, इस वजह से इस तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वी विल seen in the acid fatty acids part. Okay, so we go through the just example. For example, lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid are desaturated, and you can see number of carbons here. So in the lauric acid, 12 carbons are present. In myristic acid, 14 carbon are present, and so on. Likewise, in case of unsaturated fatty acid, you can see the first example, that is oleic acid. So it also known as monounsaturated, and here you can see the 18 carbons are present. Okay. Then you can see the linoleic acid, that is polyunsaturated, alpha linolenic acid, then gamma linolenic acid, and ricinoleic acid. So these are the different example of the fatty acid. Okay. So take a screenshot of it because it asks in the examination. ठीक है, ये examination में पूछ सकते हैं. That's why. ठीक है. So coming toward the next part, guys, you can see the glycerol here. ठीक है. So this is the diagram of glycerol. ये जो डायग्राम हमें दिख रही है, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल. एंड यू नो ग्लिसरॉल is a nothing but the one type of alcohol, and when fatty acid mix with this glycerol or fatty acid attach to the glycerol, then क्या बनता है, उससे फैट का डेवलपमेंट होगा. ठीक है. सो 1 मिनट. ओके, एक मैं छोटा सा डायग्राम ही बना के लेता हूं. सो हियर इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी, इसको प्लस कर देते हैं पहले. ठीक है. ओके, चलो. सो व्हेन एच ओ ओ सी मीन्स सी ओ ओ एच, हियर R1, here R2, and HOOC, here R3. Okay. So this portion is known as the glycerol. इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द फैटी एसिड. ठीक है. So this is the fatty acid. So you can see there have one molecule of glycerol and here three molecule of fatty acid. Okay, and it develop the fat. Okay, so ये क्या करता है, फैट का डेवलपमेंट करता है. ठीक है. एंड इसका जब डेवलपमेंट होता है, सो दिस टाइप ऑफ you can see the formula we can develop for it, and CH2 bond OOC R2, then here CH2 bond OOC R3, and plus H2. So one H2O release when a glycerol and fatty acid develop. मतलब जब glycerol और fatty acid came, sorry, when glycerol and fatty acids are mixed, when fats डेवलप एट दैट टाइम वन H2 रिलीज, तब क्या होगा, एक H2 वहां से रिलीज होगा. ठीक है. चलो 1 मिनट. ओके. सो कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, you can see fatty acids are esterified with the glycerol through ester bond. ठीक है. मीन्स ग्लिसरॉल जो फैटी एसिड्स है दैट आर esterified by the glycerol through the ester bond. Okay, and then they form the monoglyceride, diglyceride, triglyceride. Okay, so when one glycerol plus one fatty acid, it's known as the monoglyceride. ठीक है. जो अभी हमने डायग्राम बनाया दैट आर द ट्राइग्लिसराइड, उसे हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड बिकॉज यू कैन सी हियर द थ्री फैटी एसिड्स. यहाँ पर हमें कितने फैटी एसिड्स देखने को मिल रहे हैं, 3 फैटी एसिड्स को देखने को मिल रहा है. When one glycerol and 2 fatty acids, it develop the
डाइग्लिसराइड, वो क्या करेंगे, एक डाइग्लिसराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। सो हियर यू कैन सी द ग्लिसरॉल, दिस इज द मोनोग्लिसरॉल, दिस इज द डाइग्लिसराइड, एंड नेक्स्ट वन इज द ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पर हमें ट्राइग्लिसराइड ऐसे तीन अलग अलग एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है प्लीज मैसेज मी इन द चैट बॉक्स, क्लियर सर। ठीक है, क्लियर सर, देन वी विल गो टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, बहुत ही इजी एंड स्लो चल रहा हूं मैं, आई नो। ठीक है, आप मुझे जानते नहीं, ठीक है, डोंट वरी, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आपके सर वापस आ जाएंगे। ठीक है, सर हैव सम हेल्थ इशू, दैट्स व्हाई आई एम कम हियर। ठीक है, क्लियर, ओके, चलो। So we go toward the next concept. Next concept देखते हैं. So here you can see the triglycerol. So we already discussed of the triglycerol. We already discussed about the fat. We already discussed about oil. We already discussed about the difference between the things unsaturated, saturated. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, so this is the important part. ये थोड़ा important part है. You need to focus on this part also. अरे, हाँ. Oh, 1 minute. Okay, ठीक है. So here you can see the different like types, or we can say example of simple lipids. यहाँ पर हमें simple lipid के अलग अलग example देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. So first is the true fat, next one is the waxes, and then in waxes you can see there have three different part: cutin, sebum, B-wax. Then what is meant by true fat? ठीक है, true fat का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, so we will start with the true fat. If you know about it, you can message me. ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैसेज करते जाइए. ठीक है, if you know about the true fat, you can add your thought in the message box. ठीक है, so when the fatty acids, ठीक है, so we already discussed about the fatty acid, and when similar fatty acids, similar fatty acids found in the fat. ठीक है, मतलब similar fatty acid in the sense we already see one of example. ठीक है, जहां पर क्या देखने को मिलता है, फैटी एसिड्स क्या है, सिमिलर है इन देयर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो इट नोन एज द ट्रू फैट्स, उसे हम कहेंगे ट्रू फैट. एंड व्हेन फैटी एसिड्स आर द डिसिमिलर, ठीक है, अब जब ये डिसिमिलर रहेंगे, ठीक है, इट नोन एज मिक्स फैट. ठीक है, उसे हम कहते हैं मिक्स फैट. ओके, देन व्हाट इज मीन बाय वैक्सेस? ठीक है, सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट द वैक्सेस, आपने वैक्स को देखा भी है. ठीक है, सो वैक्सेस आर द फैटी एसिड ईस्टर एंड लॉन्ग चेन विद द अल्कोहल. ठीक है, सो ये क्या रहेगा, एक लॉन्ग चेन रहेगा. ठीक है, and it with alcohol, that thing is known as the waxes. You can see the different three waxes के बारे में यहाँ पर we need to discuss. First is the cutin, next is the sebum, and next one is the B wax. ठीक है, so cutin are found on, ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है हमें, फाउंड ऑन epidermal part of leaves. ठीक है, सो यू नो दी प्लांट लीव्स, प्लांट लीव जो रहता है उसके ऊपर में एक वैक्स कवरिंग हमें देखने को मिलता है, विच रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. दैट थिंग इज नोन एज द क्यूटिन, उसे हम कहते हैं क्यूटिन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सीबम. ओके, सो सीबम इज द वी कैन से सिक्रेट बाय अवर बॉडी, ये हमारे बॉडी से सिक्रेट होता है. ठीक है, इफ यू लाइक
कुछ कॉटन लेके, ठीक है, यू नीड टू टेक कॉटन एंड यहाँ से ऐसे अराउंड नोज, अराउंड अवर दैट पार्ट, लाइक जो हमारा ये अपर पार्ट है, ठीक है, अपर रीजन है, ठीक है, हेड है, ठीक है, फ्रॉम दैट पोर्शन इफ यू लाइक take a swab of cotton, so you can see some oily components. Okay, so you can see the some of oily part. Okay, that nothing but the sebum, उसे हम कहेंगे sebum, ठीक है. So it also known as in our general language like skin oil, ठीक है, और ऑयल फ्रॉम द स्किन मतलब हमारे स्किन से निकलने वाला ऑयल. एंड इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर स्किन. ये क्या करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है. एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट द बी वैक्स. ओके, सो वैक्स विच प्रोड्यूस बाय द बीज इज नोन एज द बी वैक्स. सो दीज आर द सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सिंपल लिपिड. ठीक है, सो क्लियर है सभी को. देन कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, that is the compound lipid. Then what is meant by compound lipid? ठीक है. So here the all things are same, no issue. For example, the esters of fatty acids and alcohol, but here you can see the additional group. Okay. Then what are the additional group? So I think you know about the phospholipid because cell unit of life already completed. That's why. So you know about the phospholipid membrane. Okay. So in that phospholipid membrane, you can see fatty acid, glycerol. That means you can see the lipid portion as well as a phosphate, or लिपिड पार्ट विद द फॉस्फेट. मतलब फॉस्फेट के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, लिपिड भी देखने को मिलता है. एंड दैट नोन एज द एडिशनल ग्रुप, उसे हम कहेंगे एडिशनल ग्रुप. एंड इट इट इज द कंपाउंड लिपिड, और इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लिपिड. ये क्या है, एक कंपाउंड लिपिड का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा. ठीक है, चलो. सो हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पर हमें ये अपर लेयर डाउन, जो डाउन साइड में वो लेयर हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड लेयर, इसे हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड लेयर. So one question like generally asked in the examination, that question is fatty acids are macromolecule or micromolecule? Please anyone, किसी को पता है तो आप बता सकते. सॉरी, जो लिपिड का लेयर रहता है, ठीक है, ये हमें मैक्रोमोलिक्यूल एज हम डिस्कस कर सकते हैं उसे, या माइक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं उसको. इफ यू हैव एनी ओपिनियन यू कैन आंसर मी इन द चैट बॉक्स. इफ नॉट देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट. इसके ऊपर वो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको एट दैट टाइम. ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट is the different example of compound and conjugated lipid. Compound lipid also known as the conjugated lipid. First is the phospholipid. So we already discussed about the phospholipid which contain phosphate plus lipid. जहां जिसके पास क्या है, phosphate plus lipid है. Next one is the glycolipid. Glyco means glucose plus lipid, that known as the glycolipids. Next is the lipoprotein, then lipid plus protein. ठीक है. Next is the sphingolipid. Then what is meant by sphingolipid? So lipid having amino alcohol sphingosine. ठीक है. So there have one compound, that compound known as amino alcohol sphingosine plus lipid. ठीक है. So these are the some of example of compound lipids. ठीक है. So this is all about the lipid. ठीक है. चलो थोड़ा और हम डिटेल में अगर जाके देखें, we already discuss about simple lipid, then compound lipid, and then we go toward the derived lipid. So derived lipid are nothing but the product of the compound lipid. So here you can see the definition.
These are the product of hydrolysis of simple lipid and compound lipid. ठीक है, so it come from the simple lipid as well as the compound lipid. For example, cholesterol. ठीक है, so cholesterol से वो बनते हैं. Sorry, cholesterol is form of the derived lipid. ठीक है, ये derived lipid का एक form है. ठीक है. So here you can see the example of derived lipid again. So steroid is the first example. I think you know about the steroid. Steroid are used in the different part, like it used as a medicine, it used as a hormone by the body. Okay, it used as a, some bile acids. Okay, bile acid which secreted by the bile. So I am right here, bile acid, hormones. So I think you know about the steroidal hormone like testosterone. ठीक है, testosterone, like we can say progesterone. ठीक है, and estrogen. So all are the sex hormones. Testosterone found in male and progesterone, estrogen are the female hormone, female sex hormone. Okay, so it made from the steroid only. Next one is some other like groups like ergosterol, uh, cholesterol. We already discussed about the cholesterol like that. Next one is the terpenes. So terpenes are nothing but the secondary metabolites. Okay. Then what is meant by secondary metabolite? Uh, a metabolic product which not directly used by the plants or some bacteria. That thing is known as the secondary metabolite. उसको हम कहेंगे secondary metabolite. So I think you know about the metabolic process, जो जहां से मतलब एक living thing का structure या living body जो जिसके ऊपर चल रहा है, that thing is known as the metabolism. ठीक है, एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज नोन एज द मेटाबोलिज्म. देन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के वजह से क्या बनेगा, एनर्जी. फाइनल जो थिंग रहेंगी एनर्जी. ठीक है, सो दैट इज अ वन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म. Likewise, in a plant, some secondary metabolites are also developed, and secondary metabolites are important for the protection of plant. ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. So when we talk about the secondary metabolites or terpenes, so terpene is useful for the fragrance in the plant. ठीक है, ये क्या करता है, फ्रैग्रेंस को डेवलप करता है, टेस्ट in the plant, and some types of pigments in the plant. ठीक है. Next one is the prostaglandin. I think you know about this prostaglandin. Prostaglandin act as a hormone, like ये हार्मोन जैसा काम करेगा, and it act uh, when inflammatory condition happen. ठीक है, मतलब चोट लगी है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज. ठीक है, पेन है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है, लाइक दैट. तो ऐसे कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन वर्क करता है. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कोलेस्टेरॉल. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिराइव लिपिड. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डिराइव लिपिड के बारे में. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ इशू यू कैन आस्क मी. इफ नॉट देन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमरिक? कौन सी चीज पॉलीमरिक नहीं है नीचे में से? Please answer. You have 1 minute to solve this question.
ओके, ठीक है। सो हियर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉलीमेरिक, मतलब कौन सी चीज पॉलीमेरिक नहीं है? देन व्हाट इज मीन बाय पॉलीमेरिक? ओके, लाइक प्रोटीन्स, like carbohydrates are the polymeric, nucleic acid are the polymeric, ये सारी चीजें polymeric है, but lipids are not polymeric. Polymeric का मतलब होगा where the repetitive subunit present, जहां पर repetitive subunit present रहता है, but lipid में ऐसा कोई चीज नहीं है। एक्चुअली लिपिड का लेयर रहता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वन लिपिड वी कैन से, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके का हमें लिपिड का लेयर देखने को मिलेगा, बट एक चेन का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लाइक यू नो अबाउट द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो रहता है इट इज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का चेन है, लाइक दैट। पॉलीसैकेराइड इज द चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, लाइक दैट। बट लिपिड का हमें लेयर देखने को मिलता है, बट चेन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट नॉट पॉलीमेरिक, इसी वजह से ये पॉलीमेरिक नहीं है। लाइकवाइज आई एम आस्क यू कि आर लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल? सो आंसर इज द मैक्रोमोलिक्यूल, बट अगेन लिपिड नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड स्ट्रिक्टली जो है मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है। चलो, so why lipid not strictly a macromolecule? Can anyone suggest? कोई बता सकता है? You can answer in the chat box. अगर नहीं तो then I will discuss. ठीक है? चलो, next part is the carbohydrate. So you know, I think you know about the carbohydrate. Carbohydrate के बारे में हमें पता है लगभग। So carbohydrate are the most abundant organic molecule in the nature, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। एंड इट कंपोज बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमें वहां पर कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। देन इट ऑल्सो नोन एज, मतलब कार्बोहाइड्रेट को और एक नाम है, दैट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेज एंड कीटोजेज, ठीक है। बिकॉज यहां पर हमें दो ग्रुप देखने को मिलते हैं, वन इज द अल्डिहाइड ग्रुप, आइदर अल्डिहाइड, और वन इज द कीटोन ग्रुप, ठीक है। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मतलब शुगर मॉलिक्यूल के अंदर। सो दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेज और कीटोजेज, ठीक है। जनरली sugars are the sweet in the taste, ठीक है, and it water soluble molecule, and the ratio is the CHO का रेशियो क्या रहेगा, 1:2:1। Example are glucose, ribose, etc. You can see the structure here, the structure of glucose, structure of ribose. Again, structure come in the examination. They ask question on the structure, so you need to practice some structures also. ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली दे आस्क अबाउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द वेरी कॉमन, दैट्स व्हाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कशन हो सकता है इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जनरली क्लासिफाइड इन द मोनो, ऑलिगो, पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से अलग अलग हमें ग्रुप देखने को मिलते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब शुगर मॉलिक्यूल कितना है उसके बेस पर। मोनो मीन्स सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, ऑलिगो मीन्स टू और थ्री
जनरली 2 शुगर मॉलिक्यूल, एंड पॉली मीन्स जो 2 से ज्यादा है। ठीक है, चलो, okay. So here you can see some example of monosaccharide. Here you can see the glucose, fructose. You can take a screenshot. इसका screenshot ले लो because इसके structure आएंगे examination. Next one is the galactose. Next one is the deoxyribose, ribose. Okay, I think you know about the deoxyribose and ribose. Deoxyribose present in the DNA and ribose present in the RNA. ठीक है? So this is the different example of monosaccharide. ठीक है, चलो. Coming to the next, here you can see the disaccharide. ये disaccharide के कुछ example है. Means molecule which form with the help of 2 sugar molecule. ठीक है, 2 शुगर मॉलिक्यूल से हमें एक मॉलिक्यूल जो मिलेगा कंप्लीट, दैट थिंग, और वी कैन से 2 शुगर सब यूनिट से हमें एक कंप्लीट यूनिट जो मिलता है, दैट नोन एज डाइसैकेराइड. ठीक है, हियर यू कैन सी लैक्टोज. सो लैक्टोज मेड बाय द गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. सो प्लीज रिमेंबर द थिंग्स. गैलेक्टोज और ग्लूकोज से क्या बनेगा? लैक्टोज. इट ऑल्सो आस्क इन द एग्जामिनेशन. Then maltose. Maltose made with glucose and glucose. Okay. Next one is the sucrose. Sucrose made by the glucose and fructose. Cellobiose is made by the glucose and glucose. Next one is the isomaltose. Okay, so from here, this structure is the important, this structure is the important, this structure is the important. ये 3 structure को हमें ध्यान में रखना. You need to remember this 3 structure: lactose, maltose, and sucrose, because it may be asked in the examination. And last one is the isomaltose. Okay. So next portion is the nitrogen bases. So nitrogen bases divided into 2 parts. One is the purine, next one is the pyrimidine. ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडीन में हमें 2 जो है डिवाइडेड देखने को मिलते हैं. When we talk about the purine, purine is the double layer structure, sorry, double रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, यहां पर हमें डबल रिंग देखने को मिलता है. यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये. लाइकवाइज इन केस ऑफ पिरिमिडिन यू कैन सी द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. यहां पर हमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन आर द एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन. लाइकवाइज पिरामिडिन का एग्जाम्पल रहेगा थाइमिन एंड यूरासिल. ठीक है, यूरासिल एक्सक्लूसिवली यूज इन दी आरएनए. इसका यूज होता है आरएनए के अंदर. ठीक है, सो नाइट्रोजन बेसिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का वो क्या रहेगा? बिल्डिंग ब्लॉक. देन यू कैन सी द न्यूक्लियोसाइड हियर. देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइट? साइट का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल. मतलब ये जब शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, यू कैन सी द एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल. ठीक है, ये कहां पे अटैच हो जाएंगे? शुगर मॉलिक्यूल के साथ. इट नोन एज द न्यूक्लियोसाइड. उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड. फॉर एग्जांपल एडेनिन प्लस शुगर इज नोन एज द एडेनिन. ठीक है, देन गुआनिन प्लस शुगर इज नोन एज द गुआनिन, लाइकवाइज. ठीक है, सो these are the न्यूक्लियोसाइड. ओके, हाँ, सॉरी यहाँ पर एडेनिन प्लस शुगर का मतलब होता है एडिनोसिन. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, नॉट एडेनिन. ये बाय मिस्टेक एडेड हुआ है यहाँ पर. लाइकवाइज साइटिडीन, गुआनोसिन एंड यूरिडीन, लाइकवाइज. ठीक है, नेक्स्ट वन आर द न्यूक्लियोटाइड्स. सो we already discussed about the nitrogen based sugar, but this part again joined to the phosphate. मतलब ये part like
nucleosides join to the phosphate and it makes न्यूक्लियोटाइड. वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है. लाइक एडेनिन शुगर प्लस फॉस्फेट इज नोन एज द एडेनाइलिक एसिड. उसे हम क्या कहते हैं, एडेनाइलिक एसिड कहेंगे. लाइकवाइज गुआनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज नोन एज द guanilic acid, cytidyllic acid, thymidyllic acid, and uridylic acid. So you can see the structure here. So this is the phosphate group, this is the sugar component, and this is the nitrogen base. And complete structure is known as the nucleotide. Okay. So when we talk about only this nitrogen base and this sugar molecule is known as the nucleoside. ठीक है, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. सो यू कैन सी द डीएनए एंड आरएनए हियर. यह ये आरएनए का स्ट्रक्चर है. इन आरएनए यू कैन सी यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. बट इन केस ऑफ डीएनए के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थायमिन. ठीक है. So this is all about today's session. If you have any query, any issue, you can ask me. ठीक है. In a 2 minute. If not, then we will wrap up the class. ठीक है. किसी का आंसर क्यूरी हो तो पूछ सकते हो. अगर नहीं है, then we can wrap up the class. ठीक है. आई थिंक किसी का प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है. ठीक है. देन गुड बाय टू ऑल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.